ओके फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे चैप्टर 42 इंसुलिन एंड ओरल एंटी डायबिटिक्स। हम लोग देख चुके थे कि डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, इंसुलिन का डिस्कवरी और केमिस्ट्री, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन भी देख लिए थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट, हाइपोग्लाइसेमिया, ये सब चर्चा किए थे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन कैसे करते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ये सब था। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स में इंसुलिन लिस्प्रो, इंसुलिन अस्पार्ट, इंसुलिन ग्लूलिसिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में रेगुलर प्लेन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में आइसोफेन इंसुलिन, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन लेंटी, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग में इंसुलिन ग्लार्गिन, इंसुलिन डिटिमिर, इंसुलिन डेग्लूटेक, इंसुलिन मिक्सचर्स में कॉम्बिनेशन ऑफ 20 to 50% रेगुलर रैपिड एक्टिंग एनालॉग विद 80 to 50% एनपीएच का मतलब होता है आइसोफेन इंसुलिन एनालॉग, लॉन्गर एक्टिंग एनालॉग बनाया जाता है। और कितना डोज लेते हैं वो भी देख लिए थे कि 0.2 to 1 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी डेली रिक्वायरमेंट रहता है। और ओबीस पेशेंट में जो है ये रहता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में, लेकिन जो ओबीस पेशेंट है उसमें क्या रहता है, द रिक्वायरमेंट इज हायर इन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। Present insulin requirement varies from 0.2 to 1.6 international unit per kg per day based on the duration of action. Insulin preparation may be grouped as, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पे इंसुलिन प्रिपरेशन को हम ग्रुप करते हैं। पहला ग्रुप है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। सम इंसुलिन, चलिए शुरू करते हैं। Some insulin analog act much faster than regular insulin. When injected, natural insulin forms hexamers which are absorbed slowly, while rapid-acting insulin analogs form monomers which are absorbed faster and rapidly attain peak levels. Such rapid peaks resemble physiological release of insulin. They are absorbed 3 times faster than human insulin, therefore can be given subcutaneously 10 minutes before food, have lesser chances of hypoglycemia. खाना खाने से 10 मिनट पहले देते हैं जिससे कि हाइपोग्लाइसेमिया का चांस कम हो जाता है। Insulin lispro, insulin aspart and insulin glulisin are rapid and short acting with a maximum duration of action of 4 to 5 hours. Their absorption is more reliable compared to the other insulin stored in the form of hexamers. पहला है इंसुलिन लिस्प्रो, इसके बारे में चर्चा करते हैं। डिफर फ्रॉम ह्यूमन इंसुलिन बाय द ट्रांसपोजिशन ऑफ 2 अमीनो एसिड्स प्रोलिन एंड लाइसिन in the beta chain, position B28 and 29, hence the name lispro. On subcutaneous administration, onset of action is in 5 to 15 minutes and peak effect in 1 hour. It offers better glycemic control and 20 to 30% lesser incidence of hypoglycemia compared to regular insulin. Humalog 1000 unit per ml injection. इंसुलिन अस्पार्ट जो है इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग aspartic acid in place of proline in the beta chain. It has similar effect as insulin lispro. Novo Rapid Flexpen 100 international unit per ml injection. फिर है इंसुलिन ग्लूलिसिन is similar to insulin lispro. It is formed by substituting glutamic acid for lysine at position B29 and lysine for asparagine at position B29. It is the analog used in insulin pump. तो इंसुलिन ग्लूलिसिन में क्या कह रहा है कि it is similar to insulin lispro. It is formed by substituting glutamic acid for lysine at position B29 and lysine for asparagine at position B23. It is the analog used in insulin pump. Short acting insulin में regular insulin is soluble or plain insulin which is mixed with a small amount of zinc. It can be given by subcutaneous intravenous intramuscular injection, but is the only insulin preparation that can be given for. The insulin molecule bind to form hexamers in the vial, which on injection gradually dissociate into monomers to get absorbed. Hence, regular insulin should be administered 30 minutes before food. On for use, the hexamers immediately dissociate into monomers and are therefore useful in emergencies. इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आते हैं थर्ड, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। NPH or isofen insulin is neutral in pH and combined with proamine to delay the absorption. Onset of action is about 2 hours but acts for 18 to 24 hours. It is generally mixed with regular or rapid acting analogs for fast and long action.
Since the long-acting insulin analog have more predictable action and pH is the less preferable form of insulin. अब आते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग. Insulin glargine is a long-acting analog which acts for 24 hours. The effect is less but attains a broad plasma concentration plateau obtained by adding two arginine molecule to carboxyl terminal of beta chain and placing glycine for asparagine. 8 A21 position. On subcutaneous injection, glargine molecule dissolves gradually and provide a low but a steady concentration of insulin in the plasma over 24 hours, the best among long-acting insulin. Insulin glargine should not be mixed with any other insulin in the syringe because it is acidic and there is risk of loss of efficacy of the other drug. इंसुलिन ग्लार्गिन को कहीं मिक्स नहीं करना है, should not be mixed with any other insulin in the syringe because it is acidic and there is a risk of loss of efficacy of the other drug. Lentus 100 unit per ml in 3 ml pen injector. Lentus 100 unit per ml in 3 ml pen injector. Insulin ditimir is another long-acting insulin analog. Myristic acid या fatty acid is attached to the terminal lysine and form B30 position. The terminal threonine is removed to get the analog insulin ditimir. It has an onset of action of 1 to 2 hours. However, it is given twice daily for a smoother control of blood sugar and lower incidence of hypoglycemic episode. It should not be mixed with any other insulin. इसको भी कोई other insulin के साथ mix नहीं करना है. Insulin degludec is another. Degludec जो है is similar to human insulin with a minor modification like deletion of last amino acid from the beta chain and addition of a glutamyl link from lysine B29. It is long-acting greater than 40 hours and also is compatible with rapid-acting insulin. It can be mixed with them. Insulin mixtures. Mixture of short, intermediate and long-acting preparation are given for a rapid onset and long duration of action. Such ready-made mixture may be available in vials or may be mixed by patient in the syringe just before injecting, and pH insulin may be mixed with regular insulin before use. Example of one such regimen that offers good glycemic control is 1 dose of glargine once a day and 2 to 3 injections of a rapid acting insulin like insulin lispro 1 dose before each meal. Onset and duration of action of insulin preparation. Rapid and short acting regular plain soluble 30 to 60 minute onset on duration 5 to 8 hours. Lispro 5 to 15 onset and 2 to 5 hour duration. Aspart 5 to 15 3 से 5. ग्लूलिसिन 5 से 15 और 1 से 2 घंटे. इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जिंक सस्पेंशन 2 घंटा ऑनसेट एंड ड्यूरेशन 18 से 24 घंटा. एनपीएच न्यूट्रल प्रोटामिन हेक्डोर्म. इसका कुछ तो पता नहीं है और अच्छा इसी का नाम है आइसोफेन इंसुलिन 2 घंटा ऑनसेट और 18 से 24 ड्यूरेशन. लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्गिन 2 से 5 घंटा ऑनसेट 18 से 24 आवर ड्यूरेशन है. डिटिमिर 1 से 2 घंटा और 6 से 24 आवर ड्यूरेशन. इंसुलिन जिंक सस्पेंशन क्रिस्टलाइन 6 आवर ऑनसेट और 20 से 36 घंटे ड्यूरेशन. पीजेडआई प्रोटामिन जिंक इंसुलिन 6 आवर ऑनसेट और 24 से 36 घंटे ड्यूरेशन. The type of insulin. Insulin preparation differ in their source and duration of action. Based on source, they may be grouped as conventional preparation obtained from bovine and porcine pancreas are no more used in most countries, though they are cheaper.
They have the disadvantages of being allergic and poorly stable.